trying to figure out इसको slide कैसे change अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अलीना बेग। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर से आए हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में या ओवरऑल काफ़ी दफ़ा बड़े कंट्रोवर्शियल से स्टेटमेंट्स भी पास किए जाते हैं, या पेरेंट्स को बहुत अच्छे से आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ें क्या हैं, ये टेक्निक्स क्या हैं, इनको घर में किस तरीके से वो कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल के ज़रिए इनको करवाना चाहिए। तो आज हमारे साथ मेहरुन्निसा है, शी इज़ अ BCBA। शी विल टेल यू अबाउट हरसेल्फ फर्स्ट, और इसके बारे में वो अपनी प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको गाइड करेंगी कि इन टेक्निक्स में क्या है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं ASD बच्चों के लिए, और किन सिनेरियोज में इनको यूज़ किया जा सकता है। सो द स्टेज इज़ ऑल योर्स मेहरुन्निसा, प्लीज़। Thank you very much. Assalamu alaikum. Hello everyone. It's very nice to be here. Thank you, Elena, for inviting me for this talk. So we are going to talk about pivotal response training, which is also called PRT, and natural environment teaching, which we call NET, and incidental teaching. And the reason that we're talking about हम इन तीनों की बात इकट्ठी इसलिए कर रहे हैं because ये सब they tie in together, ठीक है, to make a very comprehensive therapy plan or treatment plan. So before I begin, I just want to tell you a little bit about myself. Currently, I reside in Lahore, and I am the director of ASEC, which is the Autism and Special Education Center. I am also a qualified autism services practitioner supervisor, and I'm an advanced certified autism specialist. I have a BSc in early childhood development, and I have a master's in teaching special education, both from the US. And I did my ABA graduate certification from George Mason University. I've been in the field of special education for over 12 years. I got my start in a New Jersey public school. और मुझे जब मैंने शुरू किया था वहाँ पे, तो मैं वहाँ सब्स्टिट्यूट टीचिंग करती थी 7 years के लिए, और मुझे पता भी नहीं था कि ऑटिज्म कोई चीज़ है। मैंने सुना भी नहीं था, मुझे नहीं पता था। लेकिन चूंकि ये इतनी वर्किंग विद ऑटिज्म चिल्ड्रन एंड वर्किंग विद स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, तो वो टीचर्स छुट्टियाँ ज़्यादा करती थी। So I, as a substitute teacher, would be put in the self-contained autism classroom and the language and learning disability, जिसको हम LLD classrooms कहते हैं. And I realized कि मुझे इन बच्चों के साथ काम करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. दूसरा, I am able to make a connection quickly with children. तो मैंने फिर उसमें ज़रा मैंने रिसर्च शुरू की, and I went back to school after 20 years. मैंने अपने आप को कॉलेज में enroll किया, and I got my BSc. And then I got my master's, and then I did my ABA. I have worked with 4 different BCBAs in the 12 years that I was in the New Jersey public school system. And then I had a wonderful supervising BCBA. Because to pass the to qualify to take the exam, आपको 1500 hours of supervision चाहिए होता है, direct supervision. And जिन BCBA ने मुझे supervise किया, he was fantastic. And ABA is you can learn from books, आपको उसकी technical terms और आपको उसकी meanings वो सब आ जाती हैं, लेकिन जब तक आप उसकी application नहीं ना सीखते, जब तक आपके पास वो practical experience नहीं होता ना, तो वो किताबी बातें रह जाती हैं. So मैं अपना जो 12 साल का experience है, और उससे पहले मैं 4 साल एक private school में भी teaching कर चुकी हूँ, मैं अपना वो सारा experience लेके वापस लाहौर shift हुई हूँ after 25 years. और मैंने यहाँ पे अभी मैं कंसल्टेंसी मैंने खोली है, and inshallah my aim is to have a truly excuse me inclusive school in Lahore. I want my children, and I call them my children, I want them to be integrated into society. Integration, inclusivity, ये US में 1970 से शुरू हुई है. हम अभी education wise, special education wise, हम अभी उस मोड़ पे हैं जहां पे US 1970s में था, एंड इसके आगे we are only inshallah going to move forward. और इंक्लूसिविटी जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही तरह लोगों को समझ नहीं आया. ये एक अल्फाज है इंक्लूसिविटी और इंटीग्रेशन, जो लोगों ने सुन लिया है और स्कूल्स ने अपने आगे लगाना शुरू कर दिया. स्कूल्स बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर माँ बाप स्कूल की भी पूरी फीस देते हैं और फिर एक शैडो टीचर की भी पूरी फीस देते हैं. आई थिंक दैट्स अनफेयर. इंक्लूसिविटी का ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ स्कूल के प्रेमिसेस पे घूम रहा है. इसका ये मतलब है कि आपका करिकुलम मॉडिफाई किया गया है उस बच्चे के लिए, और आपने प्रोवाइड किया है एक ट्रेन्ड स्टाफ मेंबर जो कि उस बच्चे को
helps that child integrate into school. वो बच्चा अपने typically developing या general education students के साथ music पे भी जाए, sports में भी participate करे, lunch भी उनके साथ बैठ के करे, and school की जो activities हैं उनमें आपका बच्चा हिस्सा ले. That's inclusivity. ठीक है? So that is my aim going forward, and I hope कि और schools भी इस तरफ आना शुरू करें. लेकिन इसमें again a lot of training is required. जो shadow teacher training है, because you need to have crisis management training. You know, you want to be able to help the child, not just sit there. ठीक है? Not just sit there and get the child through the day, but actually help the child learn, because our children are capable of learning. They are 100% capable of learning, which is why ABA is the only scientifically based, evidence-based practice जिससे हमें पता है कि हम अपने बच्चे को social skills सिखा सकते हैं, self-care skills सिखा सकते हैं, academic skills सिखा सकते हैं. ठीक है? So with that, moving on, I'm going to start with pivotal behavior. A pivotal behavior, अब पहले मैं आपको इसकी बड़ी technical definition दे देती हूँ कि it's a behavior that once learned produces corresponding modifications or covariations in other adaptive untrained behavior. ठीक है? Untrained behavior जो है ना, जो कि बच्चे को explicitly सिखाया नहीं जाता, लेकिन वो बच्चा makes connections. आपने बच्चे को एक behavior सिखाया है और फिर उस बच्चे ने connection करके एक नया behavior करके आपको दिखाया है एक नई environment में जहां उसको training नहीं मिली. और जब मैं आपको और explain करूंगी तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी. Which leads to new opportunities for reinforcement. सबसे बड़ी जो the most significant thing about ABA or any behavior that we do is motivation. When you are motivated, when a child is motivated, the child will engage in a behavior. ठीक है? And this doesn't apply to just ASD children or special education children. This applies to your typically developing children as well. ठीक? Examples of pivotal behavior are making choices, self-initiation, imitating peers, self-management, and responding to multiple cues. अब ये जो चीजें हैं, ये typically developing बच्चों के लिए they are easy. But for our population, we have to teach them. ठीक है? अब let's see how we can teach them. But before we do that, I want to just break down the definition of pivotal behavior and explain it in a little bit more detail. So corresponding modification means slight changes in behavior that apply to the current situation. Meaning कि मैंने बच्चे को classroom में कुछ सिखाया है या playground में कुछ सिखाया है और वो बच्चा उस behavior को adapt करके उसको घर में use कर रहा है to get what he wants. ठीक है? Covariations, it means different shapes of the same behavior. Behavior can come in many shapes, right? A बच्चा स्पेशली पाकिस्तान जैसी जगह में जहां बच्चे अक्सर दो जबानें बोलते हैं, कई दफा 3 जबानें भी बोलते हैं. कोवेरिएशन का मतलब है कि कभी वो आपसे इंग्लिश में कहेगा, कभी आपसे उर्दू में कहेगा, कभी आपसे पूरे सेंटेंस में बात करके मांगेगा, कभी एक लफ्ज में मांगेगा. ठीक है? And adaptive means behaviors that make it possible for a person to navigate his environment successfully with minimum conflict. Our goal is to teach our children socially adaptive behaviors. ठीक है? ऐसे behaviors जिसमें that help the child be a part of the environment, not behaviors जिसमें बाकी बच्चे से खेलना ना चाहें या टीचर बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकाल दे. We want to, those we call maladaptive behaviors. We want to change those into adaptive behaviors. And untrained means unlearned. In pivotal response training, we use ABC. ABC is the basic unit of analysis in applied behavior analysis. ठीक है? A is antecedent. Antecedent is what happens before a behavior, immediately before a behavior, 3 to 5 seconds before. ठीक है? उसमें हम बच्चे को clear opportunity to respond. मतलब उसमें आप जो instruction देंगे ना बच्चे को बहुत clear होनी चाहिए. What do you want? And you hold up 2 items. For example, I can hold up a timer and I can hold up a smiley face. And I can ask the child, what do you want? ठीक है? Very specific, very clear. Bacha will respond and that is the behavior, that is the B. The bacha can say ball or he can say smiley face. I don't have a ball right now. And the consequence is I will give him the ball, but at the same time, I will pair it with reinforcement, social praise. I say, super job saying ball, here you go. So that's your ABC in pivotal response training. ठीक है?
These are some very significant points to remember when using PRT. So it was first developed by Robert Kogel, who is a senior research scientist at Stanford University. And before that, he was a professor and director of Kogel Autism Center at the University of California. इसमें जो points to remember, जो उन्होंने, the person who invented pivotal response training, ये उनके points to remember है. सबसे पहला आपका जो पॉइंट है कि जो क्वेश्चन आप बच्चे से पूछें या जो आप इंस्ट्रक्शन बच्चे को दें, इट शुड बी वेरी क्लियर. ठीक है, इट शुड बी अनइंटरप्टेड एंड इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द टास्क. फिर इट शुड बी इंटरस्पर्स्ड विद मेंटेनेंस टास्क, मीनिंग दिस, इसका थोड़ा सा इसमें जो एक हम स्ट्रेटजी यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड हाई पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस. हम हाई पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस पीआरटी के साथ यूज करते हैं, क्योंकि आप बारी बारी एक ही इंस्ट्रक्शन नहीं बच्चे को दे सकते. व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, व्हाट्स, ऐसे नहीं आप कर सकते, राइट? या ये नहीं कह सकते कि डू दिस, डू दिस. यू हैव टू इंटरस्पर्स इट. मेंटेनेंस टास्क का मतलब है जो बच्चे ने चीजें सीख ली हैं. तो वी ऑल्सो यूज इट ऑलमोस्ट एज अ प्रैक्टिस सेशन. उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कि इट हैज टू बी चोजन बाय द चाइल्ड. पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग में इट हैज टू बी इनिशिएटेड बाय द चाइल्ड. ठीक है, it is not initiated by the instructor. It includes multiple components. इसका मतलब है कि हम सिर्फ PRT नहीं करते, हम NET, incidental teaching, high P request sequence, बहुत कुछ मिक्स करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं. Reinforcer should be contingent upon the behavior. ये एक वैसे प्रिंसिपल है अप्लाई बिहेवियर एनालिसिस का कि जब आप reinforcers, अब मैं ये भी बता दूं कि reinforcer क्या होता है. रीइंफोर्सर का ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को एक चीज पसंद है, ये रीइंफोर्सर नहीं होता. रीइंफोर्सर वो होता है जो उस बच्चे के उस बिहेवियर की फ्यूचर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है. यानी कि वो बच्चा उस बिहेवियर में फ्यूचर में और इंगेज करेगा. ठीक है, वो बिहेवियर बारी बारी रिपीट करेगा ताकि उसको वो रीइंफोर्सर मिले. वो रीइंफोर्सर होता है. अगर आप समझे कि ये पेंसिल मेरे बच्चे के लिए रीइंफोर्सर है, इसका मतलब है कि इस पेंसिल को हासिल करने के लिए, और उस बच्चे को मैं बिहेवियर सिखा रही हूँ क्लैप हैंड्स, इस पेंसिल को हासिल करने के लिए वो बारी बारी हर इंस्ट्रक्शन के बाद करेगा क्लैप हैंड्स. अगर उसको ये पेंसिल रीइंफोर्सर नहीं है ना, तो मैं उसको दिखाती रहूं और मैं से कहूँ क्लैप हैंड्स, वो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसको कोई मोटिवेशन नहीं है. ये रीइंफोर्सर नहीं है उसके लिए. ठीक है. एडमिनिस्टर्ड फॉलोइंग एनी अटेम्प्ट्स टू रिस्पॉन्ड. रीइंफोर्समेंट जो है आपने बच्चे को एकदम प्रोवाइड करनी है विद इन 3 to 5 सेकेंड्स बिहेवियर के बाद, और हर अटेम्प्ट के लिए देनी है. इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्केड्यूल रीइंफोर्समेंट. हर शुरू में जब आप पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग हम यूज करते हैं, हर अटेम्प्ट के बाद रीइंफोर्समेंट देते हैं. एंड इट हैज टू बी रिलेटेड टू द डिजायर्ड बिहेवियर, कि हम बच्चे को जो बिहेवियर टीच कर रहे हैं, इट हैज टू बी, द रीइंफोर्समेंट हैज टू बी रिलेटेड टू दैट बिहेवियर. ठीक है. अगर हम जिस तरह प्लेग्राउंड में हम बच्चे को सिखा रहे हैं हाउ टू यूज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, तो द रीइंफोर्समेंट वुड प्रोबेबली बी कि उस बच्चे को एक्सेस मिले टू दैट रीइंफोर्समेंट, टू द डिजायर्ड बिहेवियर. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ऑफ पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग. सो फॉर एग्जांपल, आस्किंग द चाइल्ड इफ ही वांट्स अ रेड क्रेयॉन और ब्लू क्रेयॉन. रिमेंबर वी सेड मेकिंग चॉइसेस. सो द चाइल्ड then learns how to make a choice between the red crayon and blue crayon, and then he uses that choice making skill at home to pick between two shirts. Do you understand? So that's how pivotal response training then transfers to the unlearned environment. Using a microwave, this is self management. आप बच्चे को माइक्रोवेव इस्तेमाल करना स्कूल में सिखा दें, बच्चा घर में अपना खाना खुद ही गर्म कर सकता है, पका भी सकता है अपना खाना. There are some foods that you can cook in the microwave. Learning how to say hello. एक बच्चे को मैंने हेलो करना सिखाया है और वो बच्चा ने मुझे हेलो करना सीखा है, मुझे ग्रीट करना सीखा है, और वो घर जाके अपनी माँ को सलाम कर दे या अपने किसी कजन या अपने किसी पेयर को हेलो कर दे. अनट्रेन्ड एनवायरनमेंट. ठीक है. एंड शेप ऑफ बिहेवियर चेंजेस. फंक्शन बिहेवियर का वही है, सेइंग हेलो और सेइंग हाय सर्व्स द सेम फंक्शन, but the shape of the behavior has changed. ठीक है. Teaching a identify an item, and then the child identifies same or similar items in the environment. A child is taught prepositions. जिस तरह मैं बच्चे को सिखाऊं कि in front क्या होता है, behind क्या होता है, कि the smiley face is behind the timer. ठीक है. और the timer is in front of the smiley face. अब वो बच्चा
प्लेग्राउंड में या कहीं बाहर prepositions यूज करके कहेगा गिव मी द बुक दैट इज इन फ्रंट ऑफ द बेयर। सिखाया मैंने उसको स्कूल में है और वो उसको ट्रांसफर कर रहा है इन एन अनलर्नड एनवायरमेंट। Child sees his friends lining up and he lines up, and that's imitation right there, and that's pivotal PRT, that's pivotal response, lining up when seeing somebody else। जिस तरह आप समझें कि आपने पहली दफा आपने बस पे चढ़ना है। मैं कैलिफोर्निया गई थी और मुझे बस सिस्टम की बिल्कुल नहीं पता था। मैं बस स्टॉप पे गई, मैंने देखा कि एक औरत ने अपना बैग मतलब उसने पैसे निकाले हैं, उसने कंडक्टर को पैसे दिए, उसने उसको टिकट दिया है। मैंने उसको इमिटेट किया, वो पिवटल रिस्पॉन्स हो गया। मैंने उसको इमिटेट किया कि इसको मैंने कॉपी करूंगी तो मैं भी बस पे चढ़ जाऊंगी। चाइल्ड लर्न्स हाउ टू जिप, हम वो जिपिंग बोर्ड पे बच्चे को जिप करना सिखाएं और बच्चा पे अपना जैकेट जिप अप करें। टोटली न्यू एनवायरनमेंट, अनलर्नड एनवायरनमेंट में अपना जैकेट जिप अप करें। चाइल्ड लर्न्स टू आइडेंटिफाई फार्म एनिमल्स इन पिक्चर्स and then the child identifies real life animals at the zoo. That's your pivotal response training. अब बिफोर वी मूव ऑन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि इट साउंड्स सिंपल इनफ, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स हैं। और वो कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स एक ट्रेंड थेरेपिस्ट जो है ना, जिसके पास एक्सपीरियंस हो या जिसने पढ़ा हो ये सब्जेक्ट मैटर, वो इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। घर में जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, वो आप इंसिडेंटल टीचिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वजह से मैंने इंसिडेंटल टीचिंग और एनईटी इंक्लूड किया इस प्रेजेंटेशन में। अब इंसिडेंटल टीचिंग क्या है? ये एक एबीए की स्ट्रैटेजी है, एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब कि हमारे पास वी हैव इनफ रिसर्च ऑन दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें है लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी बच्चे का कमरा, बच्चे का घर, बच्चे का क्लासरूम इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स इंटरेस्ट। दिस इज चाइल्ड इनिशिएटेड। इसका मतलब है कि बच्चा इनिशिएट करता है इंसिडेंटल टीचिंग, टीचर या पेरेंट्स नहीं करते। It is based on finding teachable moments when the child shows interest in a special item or activity, and the educator or the teacher or the parent follows the child's lead. ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, आपने उस चीज से टीचेबल मोमेंट्स निकालने हैं, और किस तरह निकालने हैं ये भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मोटिवेशन की मैंने बात शुरू में की थी ना। जब आप इंसिडेंटल टीचिंग यूज करते हैं ना, उसमें पहले ही बच्चे के अंदर मोटिवेशन होती है किसी चीज के लिए, या कोई चीज हासिल करने के लिए, या कोई एक्टिविटी करने के लिए, या कहीं जाने के लिए, पहले ही उसमें मोटिवेशन होती है। तो आपका पहले जब मोटिवेशन, आपको इंक्रीज मोटिवेशन मिल रही है, इसके चांसेस हैं कि यू विल बी एबल टू डू दिस इन अ बेटर वे बिकॉज मोटिवेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट। इस पे स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर्स होते हैं, क्योंकि इंसिडेंटल टीचिंग में यूजुअली हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे को पसंद हो, जिनके लिए बच्चा काम करने को तैयार है। और इसमें इट कैपिटलाइजेस ऑन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन स्पेशल आइटम्स। तो इसमें आप स्टेप्स इस तरह है इसकी कि सबसे पहले आप अरेंज द एनवायरनमेंट टू कंटेन आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द चाइल्ड। सो फॉर एग्जांपल, आजकल मेरे पास एक बच्चा स्टूडेंट आता है, उसको कार्स की मूवी बहुत पसंद है। तो अब मैंने अपने, जहाँ पे मैं अपनी सेशंस करती हूँ, मैंने कार्ड्स की एक्टिविटीज, क्रेयॉन्स, कलरिंग बुक्स, 2-3 चीजें लाके ना दूर दूर करके रखती हैं। मैंने एनवायरनमेंट अरेंज कर लिया टू कंटेन आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द चाइल्ड। अब मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब मैं इंतजार करूंगी कि बच्चा इंटरेक्शन इनिशिएट करे। मैं नहीं उसको कहूंगी तुम्हें ये चाहिए लाइटनिंग मक्वीन, मैं नहीं कहूंगी, मैं वेट करूंगी कि वो मुझे कहे। फिर मैं उस बच्चे को कहूंगी, उसको आई विल आस्क हिम टू इलैबोरेट, डिस्क्राइब, काउंट और आइडेंटिफाई। अब मैंने वो लाइटनिंग मक्वीन का क्रेयॉन्स या बुक्स या जो भी मैंने उसके रखे हुए हैं, मैं उनसे टीचेबल मोमेंट्स निकालूंगी। और फिर जब वो टीचेबल मोमेंट्स, वो व्हेन द चाइल्ड डज व्हाट आई एम आस्किंग हिम टू डू, आई विल इमीडिएटली गिव हिम द ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट आर प्लेस्ड वेयर द चाइल्ड कैन सी देम बट कैन नॉट एक्सेस देम विदाउट इनिशिएशन। घर में जिस तरह माँ बाप आप इस तरह कर सकते हैं कि एक चीज बच्चे को पसंद है, खाने की चीज, वो आप दूर रख दें, फ्रिज के ऊपर रख दें जहां उसको नजर आ रही है, और फिर इंतजार करें कि वो पूछेगा, वो मांगेगा, विच वी कॉल मैंडिंग। वो मांगेगा उस चीज को, फिर आप उसको दे दें। बहुत से पेरेंट्स आके कहते हैं कि जी ये बोलता नहीं, या मेरा बच्चा भी बोलता नहीं। A very big reason why children don't speak is because they don't need to. They don't need to make the effort to speak. Why? Because उनकी सारी needs हम पहले पूरी करते जाते हैं।
So a child who comes to me और माँ बाप कहते हैं कि ये बोलता नहीं, so and the child is vocal, so फिर उनके लिए जो मैं प्रोग्राम डिजाइन करती हूँ उसमें ये मैं रखती हूँ प्रोग्राम में कि वेट फॉर द चाइल्ड टू आस्क. अगर उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, बेसिक चीजें भी मांगने दें उसको. वो मांगेगा तो वो मांगना सीखेगा ना. जब उसको अपने अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है तो क्यों करेगा. तो इसलिए ये इंसिडेंटल टीचिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर स्पीच डेवलपमेंट. Examples. You observe that the child has started showing an interest, and showing an interest का मतलब है कि he reaches for them, he chooses them among other toys. उसको suddenly Legos बहुत पसंद है. So you move the Legos to a place where he can see them, but he cannot get them without initiating. Legos उसको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं उनको ले सकता. अब उसको चाहिए वो ये Legos. अब motivation high है ना, अब he's going to figure out a way to get to those Legos. ठीक है. दिस इज वेयर इंसिडेंटल टीचिंग कम्स इन. अब आप उस बच्चे से, ये जो आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं, मैं उन लेगोज से बच्चे को पूछूंगी व्हाट कलर इज दिस, एंड राइट देयर कलर डिस्क्रिमिनेशन आ गई. मैं उससे पूछूंगी व्हाट इज दिस फॉर, एंड आई टीच हिम टू से टू बिल्ड. फंक्शन आ गया लेगोज का. मैं उससे पूछूंगी वेयर इज इट. मैं एक लेगो टेबल के ऊपर रखूंगी और मैं उसको सिखाऊंगी ऑन द टेबल. मैं एक लेगो किसी चीज के पीछे रखूंगी, बिहाइंड द behind something. Prepositions आ गई. अपने हाथ में मैं पकड़ के उससे पूछूंगी how many do I have in my hand. He's going to count 1 2 3 4 5. ठीक है. मैं उससे पूछूंगी give me 5 Legos. नंबर डिस्क्रिमिनेशन आ गई, वो मुझे काउंट करके देगा. मैं उससे कहूंगी मैच, एक लेगो देख कहूंगी इसका मैच करो, मैचिंग टू सैंपल आ गई. साइज डिस्क्रिमिनेशन आ गई, कलर डिस्क्रिमिनेशन आ गई. सो राइट देयर एक छोटे से लेगो के पीस से आप कितना कुछ बच्चे को सिखा सकते हैं. और चूंकि बच्चे में मोटिवेशन है लेगो लेने की, that's an excellent teaching moment. Another example is that you observe the child is reaching for the dolls in the play area or at home. You remove the doll to a place where the child can see it but cannot reach it, and use that opportunity then to ask doll ki point to the doll's eyes and point to your eyes. And you ab bacche ko kya point to your eyes, body part identification, instead of sitting at a table and saying where are your eyes, point to your eyes. No, that's boring. I'm going to teach him body part identification in a fun way. फिर मैं उससे पूछ सकती हूँ कि what are the colors that you see in the doll's dress, and then he can identify colors or she can identify colors. फिर मैं पूछ सकती हूँ how many fingers does the doll have and how many fingers do you have. Real life connection बन गया right there. Counting भी हो गई, real life connection भी बन गया. फिर आप डॉल के शूज देख के कह सकते हैं कि do they look the same as your shoes? What's different? You're teaching the child discrimination right there. वो कलर देखेगा कि सेम है कि नहीं, वो उसके देखेगा अच्छा मेरे शूज के ऊपर लेसेस हैं, डॉल के शूज के ऊपर बकल है, डॉल के शूज प्लास्टिक से बने हुए हैं, नए शूज रबर से बने हुए हैं. Are the doll's eyes open or shut? Opposites भी आपने इंक्लूड कर लिए बीच में. तो छोटी सी एक चीज से आप कितना कुछ बच्चे को सिखा सकते हैं. और इसमें एक और चीज मैं जो स्ट्रेस करना चाहूंगी, ये बहुत टाइम नहीं लेती चीजें. ये नहीं है कि आपने खास तौर पे कोई टाइम निकाल के ये करना है. ये लिटरली सारा कुछ आप 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में कर सकते हैं. लेकिन चूंकि आपके पास मोटिवेशन है, उस वक्त बच्चे की मोटिवेशन है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, उसको इस्तेमाल करें फॉर इंसिडेंटल टीचिंग. और ये आप घर में बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इंसिडेंटल टीचिंग का फायदा उठा सकते हैं. इंसिडेंटल टीचिंग में सबसे जरूरी बात है कि आप बेसिकली आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं. तो जब बच्चा का प्ले टाइम होता है, उस वक्त आप बच्चे को ऑब्जर्व करें, देखें कि वो किस चीज के पास ज्यादा जा रहा है. नेक्स्ट हमारी आ जाती है जी नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग. इसका सीधा सा मतलब है कि इट इज टीचिंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट द चाइल्ड इज इन एट द मोमेंट. अब एनवायरनमेंट क्या होती है? एनवायरनमेंट इज एनी प्लेस दैट द चाइल्ड इज इन. अब आपके घर में हर किस्म की एनवायरनमेंट, आपकी डाइनिंग रूम एनवायरनमेंट फर्क है, ठीक है, आपकी बेडरूम एनवायरनमेंट फर्क है. बेडरूम में आप लेट सकते हैं बेड पे, डाइनिंग रूम में आपने डाइनिंग टेबल पे नहीं लेटना. एनवायरनमेंट चेंज हो गई ना. बाथरूम एनवायरनमेंट फर्क है, प्ले रूम एनवायरनमेंट, और फिर डिफरेंट पीपल. जब आपकी एनवायरनमेंट में फर्क लोग भी आते हैं ना, तो आपकी एनवायरनमेंट बदल जाती है. बहुत से बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के आगे और बिहेवियर होता है, कोई तीसरा चौथा बंदा आ जाए तो बिहेवियर बदल जाता है, राइट, बिकॉज एनवायरनमेंट बदल गई है. आपका बिहेवियर एनवायरनमेंट के साथ बदलता है, बच्चे का बिहेवियर भी एनवायरनमेंट के साथ बदलता है. स्कूल में आपकी कितनी एनवायरनमेंट्स हैं? क्लासरूम में फर्क एनवायरनमेंट है, प्लेग्राउंड में फर्क है, प्लेग्राउंड में भागो,
ऊंची आवाज में बोलो, किसी को आवाज दो। क्लासरूम में बैठ के बात सुननी पड़ती है, हैंड रेजिंग करनी पड़ती है, यू हैव टू स्टे इन योर सीट इन द क्लासरूम। सो अगेन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। इसमें जो नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग है ना, इट टेक्स लर्निंग इनटू द रियल वर्ल्ड। हमारा टीचिंग का मकसद क्या है? टीचिंग का मकसद सिर्फ किताबों तक तो नहीं ना महदूद। टीचिंग का मकसद है कि बच्चे अपनी रियल लाइफ एनवायरनमेंट में उस टीचिंग को इस्तेमाल करें। नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग पहले रियल लाइफ में होती है, रियल लाइफ सिचुएशन में होती है, रियल वर्ल्ड में। It allows and encourages students to notice and react to the world around them. A lot of times हम खुद नहीं नोटिस करते हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। स्पेशली आजकल सबने फोन हाथों में पकड़ा होता है, सब स्क्रीन में होते हैं और अपने इर्द गिर्द नहीं देखते। नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग में आप एक बच्चे को, यू टीच द चाइल्ड टू बी अवेयर ऑफ हिज और हर एनवायरनमेंट। It makes it possible for children to make real life connections and it allows children to practice what they learn. नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग में बहुत सी प्रैक्टिस, बिकॉज देखें एक बच्चे को, स्पेशली हमारे AST बच्चों को या हमारी पॉपुलेशन के बच्चों को, हमने एक चीज़ सिखा दी है ना और हमारे डेटा में आ गया कि उसने मास्टर कर लिया है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसको हमेशा के लिए याद हो गई है। अगर मैं उसको प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज नहीं दूंगी वो भूल जाएगा। अगर उसको प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज घर पे नहीं मिलेंगी वो भूल जाएगा। इतनी मेहनत से आप एक बिहेवियर बच्चा सीखता है और उसको प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती वो भूल जाता है। सो नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग में बहुत सी प्रैक्टिस आ जाती है। This is how it works. It capitalizes on anything and everything in the child's environment. किसी भी चीज से आप नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट से कर सकते हैं। What color do you see? What does red mean? What's the car next to you? What color is the car next to you? How many people do you see in the car next to you? Anything you can use in the child's environment. What color leaves do you see? आप पार्क पे हैं. What color leaves do you see? Show me the big leaf. Show me the small leaf. Which one is the flower? Anything. So you just basically इसमें ये है कि आपको बहुत इसमें एफर्ट लगता है। ये नहीं है कि एफर्टलेस नहीं है। एजुकेटर का, पेरेंट का, टीचर का बहुत एफर्ट लगता है इसमें, because you yourself have to be aware of the environment also. It provides teachable moments anytime, anywhere, and it makes use of naturally occurring reinforcement. जो हमारा मकसद है ABA यूज करने का, और रीइंफोर्समेंट में हम एडिबल्स कभी यूज करते हैं, कभी हम खिलौने यूज करते हैं, कभी हम एक्टिविटीज यूज करते हैं। हमारा फाइनल मकसद ये होता है कि हम वो सारी आर्टिफिशियल समझे रीइंफोर्समेंट को निकाल दें और बच्चे को नेचुरली अकरिंग रीइंफोर्समेंट में शुड बी इनफ फॉर हिम। इसलिए हम सोशल प्रेज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम हर टेंजिबल या हर एक्टिविटी रीइंफोर्सर के साथ सोशल प्रेज उसके साथ पेयर करें, उसके साथ इस्तेमाल करें, ताकि जब हम वो खिलौना या वो एडिबल या जो भी हम रिमूव करेंगे, सोशल प्रेज विल स्टिल स्टे। It is not restricted to table time and anyone in the child's environment can facilitate learning. ठीक है, facilitate का मतलब है कि आप encourage कर सकते हैं, आप help कर सकते हैं बच्चे की learning को। Examples आपके NET के हैं, reading billboards. लाहौर में इतने बिलबोर्ड्स हैं, इस्लामाबाद में मैंने इतने नहीं देखे, कराची में भी आई एम श्योर बहुत होंगे, और हमारे बड़े शहरों में हैं बिलबोर्ड्स। Ask a child to read. What word do you see on? What word do you see? Do you see the word off in that billboard? Read the billboards. Reading doesn't have to be restricted to just books and print and sitting down and reading. Reading can be anywhere, anytime. There's so much material all around us to read. Finding letters and numbers in the grocery store. ये एक मेरी बहुत फेवरेट एक्टिविटी थी with my own kids when they were little. क्योंकि ग्रोसरी स्टोर 2 बच्चों के साथ जाना काफी मुश्किल काम होता था। तो वहां पे मैं कोशिश करती थी कि जितना मैं इसको एक फन एक्टिविटी बना लूं इनके लिए, then they won't be running up and down the aisles and they won't be getting in trouble. तो एक बच्चे को मैं कहती थी कि तुमने जाके लेटर X ढूंढना है या तुमने लेटर W ढूंढना है, जो कि जरा मुश्किल है। लेटर W, ABC तो जरा आसानी से मिल जाते हैं ना, तुम्हें चल लेटर W ढूंढना है। और दूसरे बच्चों को कहती थी कि तुम ना ये सीरियल के डिब्बे काउंट करो, उतनी देर में मैं अपने कार्ट में रख लेती थी जो मैंने रखना था। माय किड्स यूज्ड टू बी एंगेज्ड इन द ग्रोसरी स्टोर। Cutting out words in newspapers and magazines and creating a story. आप अपने बच्चों के साथ turn it into a fun activity. आप सारे बैठ के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में से वर्ड्स निकालें, एक स्टोरी लिखें without having to write. Saying prepositions in the playground. Where am I standing? Next to the slide. Show me on top of the slide. I'm coming down the slide. I'm swinging back and forth.
I'm standing behind the swing. Naming fruits and vegetables in the grocery store. Again, you're in the grocery store, फल सब्जियां तो लेनी है ना, तो बजाय इसके कि बच्चे को हम हमेशा तस्वीर में ही एप्पल दिखाएं और तस्वीर में ही बनाना दिखाएं, हम उसको रियल लाइफ में क्यों ना दिखाते हैं? हम उसको रियल लाइफ में जाकर ग्रोसरी स्टोर में पूछें कि टू नेम देम. जिस मैं अपने बच्चों के लिए मैं प्लास्टिक बैग खोल के अपने बच्चों को कहती थी पुट 6 एप्पल्स इन, 1 2 3 4 5 6, ही वुड काउंट. ठीक है, या मैं उसे कहती थी पुट ग्रीन एप्पल्स इन, तो अगेन ही वुड हैव टू लुक फॉर द ग्रीन एप्पल्स. Finding cars that are the same color on the road, naming rhyming words while reading, naming opposites, looking for shapes, discriminating between sizes. Any of this, any parent can do anywhere with their child. अच्छा, ये 2 आर्टिकल्स हैं जिनको अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो दे शुड ओपन अप. द फर्स्ट आर्टिकल इज जिसमें से मैंने कुछ मटेरियल लिया है, which is how to teach pivotal behaviors to children with autism. This is actually a training manual. It's about 44 pages long. You don't have to read all of it, but there's a lot of information in this, which is very easy to understand regarding pivotal response. And the next one is a pivotal response training, which is an evidence-based practice. इसमें आप you will find out why pivotal response training is an evidence-based practice, and hopefully it will encourage you to use it. And I want you to please note that both these websites end in .gov, and these are both articles that I used in my studies. जब आप as parents आप research करते हैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज़, please make sure that the resources you use are not .com. Please don't get your information from parenting magazines. Please don't get your information from unreliable resources. Get them from resources that end in .gov or end in .org. ठीक है, वो आपकी academic resources होती हैं, वो research based resources होती हैं, वो reliable resources होती हैं. दूसरी बात मैं ये stress करना चाहूँगी before I end is कि ये जो PRT, NET and incidental teaching है, ये सिर्फ ASD बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे typical and non-typical बच्चों के लिए. And I use the words typical and non-typical because I keep hearing people use the word normal and abnormal. That is disrespectful. We cannot use the word abnormal for anyone. It's an outdated, disrespectful word. We have to respect the population of students that we work with. So now we use the word typical and non-typical. और typical का मतलब ये है कि the child is hitting milestones that the medical community has identified. कि भाई इस इतने महीने पे बच्चे को ये करना चाहिए, इतने साल पे बच्चे की इतनी लैंग्वेज होनी चाहिए, या इतने साल पे बच्चे को ये करना चाहिए. हमारे बच्चे थोड़े डिले से करते हैं. And because of that delay, US में पब्लिक स्कूल सिस्टम में आपके जो typically developing बच्चे हैं, they graduate high school at 18. And your special education students are given free education till the age of 23 to make up for the delay. तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उनकी delayed learning है, उनका processing disorder है. We have to keep that in mind when we teach them and when we work with them. ठीक है? And that's it. That's the end of the presentation. I hope I was able to give you some useful information, and I hope I was able to explain it in a way that you understand. Thank you so very much, Melissa. It was really बहुत informative थी. I'm sure कि parents के बहुत सारे ऐसे queries हैं जो कि आज resolve हो, क्योंकि इस questions जो अक्सर वो पूछते रहते हैं. अच्छा, there are some things that I wanted to ask you. Okay, is there any age restrictions for these techniques? Okay, for instance, PRT है वो किस age की limit तक बच्चों को करवानी चाहिए, incidental teaching की, या इस तरह से क्या इस पे कोई age restrictions होती हैं? None at all. No age restriction, and the reason for that is obviously early intervention is best. As soon as you see a delay in your child, as soon as your child gets a medical diagnosis, it is best to start early intervention. Because उस वक्त क्योंकि मुश्किल पता है क्या होती है? मुश्किल होती है unteaching. Absolutely. जब बच्चा मेरे पास आता है ना at a certain age, जहाँ के माँ बाप, and I 100% sympathize with parents जिनको out of the blue कुछ इस तरह का diagnosis मिल जाए अपने बच्चे के बारे में. It's very hard. It's very difficult. But जितनी जल्दी आप अपने बच्चे के लिए एक qualified therapist ढूंढ लें और बच्चे की ये and therapy जो है ना, it's not a bad word.
यहाँ पे लोग समझते हैं कि थेरेपी कोई बुरा लफ्ज़ है। बुरा लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है। थेरेपी जस्ट मीन्स अ डिफरेंट टीचिंग मेथड, दैट्स ऑल इट मीन्स। ठीक है? जितनी जल्दी आप वो कर लेंगे, आपका बच्चा मैल अडैप्टिव बिहेवियर्स नहीं सीखेगा, आपका बच्चा शुरू से अडैप्टिव बिहेवियर सीखेगा। क्योंकि एक बच्चे को अनटीच करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थेरेपिस्ट हु हैव बीन इन द फील्ड फॉर डेकेड्स, उनके लिए भी मुश्किल है अनटीच करना, क्योंकि आपने अच्छा, बच्चे को इसमें ये भी जी, जी जी प्लीज़ बोलें। नहीं, बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन हो उतना अच्छा है। और दूसरा देखिए, पीआरटी, एनईटी और इंसिडेंटल टीचिंग जो है ना, ये इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, उसकी इन्वायरमेंट चेंज होती है, उसकी लर्निंग रिक्वायरमेंट चेंज होती है। इसलिए दीज कैन बी यूज्ड फॉर एनी एज ग्रुप, एनी एज ग्रुप एट ऑल। या अच्छा, इसी से मैं एक और जो क्वेश्चन अराइज होता है कि गुड थेरेपी एंड बैड थेरेपी, दिस इज समथिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस होती है थेरेपीज में। इन फैक्ट आई वुड से कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि किस तरीके से किसी थेरेपिस्ट के क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक करते हैं, या कौन सा ऐसा थेरेपिस्ट है जिसके पास अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए। तो इस पे आप कुछ कमेंट करो कि किस तरीके से पेरेंट्स को किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन से ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं जो उनको चेक करने चाहिए। बिल्कुल कमेंट करना चाहूँगी, और मैं काफ़ी एक्टिवली कमेंट करती भी रहती हूँ इस चीज़ पे, बिकॉज़ आई रियली want to make parents aware of their rights, and I want to really make them, if you are paying a school, then you have rights. ठीक है? You have rights to demand from the school. मैं जब because I'm looking to hire people these days for my center, मैं लोगों से रेज्यूमेज मंगाती हूँ। अगर किसी ने अपने क्रेडेंशियल्स में ये लिखा हुआ है फ्रॉम अ हाईली acclaimed institute, that means nothing. That means nothing. Give me the name of the institute. ठीक है? अगर किसी ने लिखा हुआ है many years of practice, means nothing. How many years? Years can be measured in numbers. How many years? सबसे बड़ी चीज that I caution parents to look out for is expert. जिन लोगों ने लिखा था ना, आई एम एन ऑटिज्म एक्सपर्ट, आई एम दिस एक्सपर्ट, देर आर नो एक्सपर्ट्स. Why are there no experts? Because we are still learning about disabilities. People who have been in the field for 40 years don't know everything about autism or developmental delays and disabilities. तो आप एक्सपर्ट कैसे बन गए? ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस तरह की वेग, एम्बिगुअस, अनक्लियर लैंग्वेज बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एज अ पेरेंट, यू हैव एवरी राइट टू आस्क द थेरेपिस्ट कि आपकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं। एक्सपीरियंस, दैट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू स्ट्रेस। आप एक ऑनलाइन कोर्स करने से थेरेपिस्ट नहीं बनते हैं। आप एक ऑनलाइन कुछ कर, दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। किताबों में, मैंने शुरू में भी कहा था, किताबों में आप बड़ा कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते ना, अंडर सुपरविजन, आप नहीं सीखते। आप उसकी गलत एप्लीकेशन ही करते जाएंगे। बेशक आपने पढ़ लिया है, लेकिन आप उसकी गलत एप्लीकेशन करते जाएंगे अनलेस यू आर सुपरवाइज्ड बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। And this इसलिए goes for everything, not just therapy. speech कोई therapy, भी audio बिल्कुल therapy, everything. Ask for credentials. Do your background, get information. सिर्फ अगर मैं आपको बैठ के कह रही हूँ ना जी मैं बड़ी ये हूँ, मैं बड़ी वो हूँ, check me out. Go to the BACB website. Type my name in. See, confirm that I am indeed a BCBA. You know, ask me the name of the school I worked at. Go to their website. Is my name on the staff? चेक इट आउट। ये चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है, और ये पेरेंट्स का हक है, ये पेरेंट्स का हक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका बच्चा, द वे ABA इज सपोज टू वर्क इज कि हम डेटा बेस्ड फील्ड हैं, हम कुछ ख्यालों में नहीं करते कि वो मेरा ख्याल है इसने आज कम इस तरह की है, मतलब ये बच्चा बहुत मारता नहीं, मेरा ख्याल है आज इसने कम मारा है, कल ज़्यादा मारना था। दैट्स नॉट हाउ वी वर्क। आई एम टेकिंग डेटा ऑन इंस्टेंसेस ऑफ अग्रेशन। मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगी कि कल 12 दफ़ा इसने हिट किया है 1 घंटे में, आज इसने 6 दफ़ा हिट किया है। इसका मतलब है कि जो हम इंटरवेंशन इस्तेमाल करें वो यूज़फुल है।
the behavior is going in the direction I wanted to go. अगर मुझे 3 to 5 data points में change नहीं नजर आ रहा ना behavior में, I change my intervention or I change a component of my intervention. मैं हर साल बच्चे को उसी intervention पे नहीं रख सकती, वो unethical है, because मैं उस बच्चे का टाइम जाया कर रही हूँ, उसके माँ बाप का टाइम और पैसे भी जाया कर रही हूँ. ये भी चीज बहुत ज्यादा होती है पाकिस्तान में, प्रैक्टिस की जाती है कि जब तक बच्चा सीधी लाइन ही ना लगाएगा उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके ही नहीं जाना. तो दिस इज समथिंग, अगर एक पजल सॉल्व नहीं कर पा रहा बच्चा, बजाय उसके कि वो तरीका बदले, वो उसी पजल पे स्टक करेंगे. And that is what adapting a curriculum is. That is what modifying a curriculum is. That is that is what experience teaches you. कि आपने अपनी टीचिंग कितनी, आप किस तरह उसको चेंज कर सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चे ने किस तरीके से सीखना है, ये आपने फिगर आउट करना है. लेकिन इसमें मैं आपको एक I just completely lost my train of thought. I have so many ABA thoughts in my head. No problem at all. अच्छा, इसमें एक पेरेंट को क्वेश्चन पूछा था कि ये PRT और IT वगैरह ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये ABA से इंटरलिंक्ड है या ये डिफरेंट है? नहीं, ये ABA से इंटरलिंक्ड. Yeah, PRT is derived from ABA. वो मैंने दिखाई थी ना आपको स्लाइड जिसमें मैंने इसको ABC के साथ लिंक किया था. तो ABC, antecedent behavior consequence, is our basic unit of analysis. हम किसी भी behavior को जब देखना शुरू करते हैं कि अग्रेशन है, समझो अग्रेशन है कि हिटिंग है, बच्चा अपने हाथ से हिट करता है अपने माँ बाप को या अपने क्लास फेलोज को या किसी को, तो वो हम उसका ऊपर फिर हम ABC देखते हैं कि एंटीसीडेंट, कि हिटिंग के बिल्कुल पहले 3 to 5 seconds पहले क्या हुआ था. अच्छा, फिर B इज बिहेवियर हुआ था और C कॉन्सिक्वेंस. और जो कॉन्सिक्वेंस है ना, दैट इज व्हाट मेंटेन्स बिहेवियर. जो कॉन्सिक्वेंस है ना, दैट इज व्हाट मेंटेन्स बिहेवियर. So we have to see the consequence. And before I move on, I just wanted to, I'll get to this question, but I want to say something, because I see a lot of parents, and I understand that parents are also trying to find answers. बहुत से पेरेंट्स इन फेसबुक पोस्ट पे और इंस्टाग्राम पे और इन पेजेस पे सवाल पूछते हैं, और वो सवाल बहुत ज़रूरी सवाल होते हैं, लेकिन वो सवाल, वो फॉर्मेट नहीं है इस तरह के सवाल पूछने का, बिकॉज बहुत से लोग आपको बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उन पेजेस के ऊपर. द थिंग विद ऑटिज्म इज, अगेन आई नो यू हर्ड दिस बिफोर बट आई वांट टू से इट अगेन, इट इज इंडिविजुअल. What works for one child does not work for another child. Yahan tak ki I've worked with siblings, I worked with twins on the autism spectrum, and we had to make completely different behavior plans for the twins. So if किसी पेरेंट ने सवाल पूछा है, don't immediately say, oh ये इसलिए कर रहा है because of this. No, we do not know any behavior such as head banging, any behavior such as hitting, any behavior such as screaming. We do not know for sure why that behavior is happening till we do a functional behavior assessment or till we observe the child. फेसबुक के ऊपर आप जाके लिख देते हैं वो हेड बैंगिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि ये है, उसको फलानी डिफिशिएंसी है, उसको, नो, misleading. I strongly advise parents against doing this. Reach out to a professional. अब तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई भी किए हैं प्रोफेशनल्स. Other Facebook pages also reach out to a professional. हम लोग, मैं एटलीस्ट यहाँ इसलिए नहीं आई कि मैं ढेर सारे पैसे बना लूँ. मैं यहाँ 25 साल बाद US छोड़ के वापस लाहौर आई हूँ with the intention of taking everything that I've learned there and bringing it to parents and children here. I am here to answer your questions. I am here to answer your inquiries. My email is available to all of you. Come see me if you're in Lahore. If you're not in Lahore, make an appointment with me online. I am here to help you. So please reach out to people like me. Absolutely. This is the first question. अब एक एक करके हम questions लेते जाएंगे parents के. How can I increase processing of ASD child? How can pivotal response and NET increase processing of ASD child? इसमें देखें, increased processing जो है ना, I cannot speed up the child's brain. Processing disorder है ना, processing delay है ना. डिले का मतलब है कि बच्चे को, एक टिपिकल बच्चे को मैं एक चीज़ कहती हूँ और उसका एकदम ब्रेन यहाँ से सुन के यहाँ पे ले जाता है और बच्चा जवाब दे देता है. जो मेरा ASD स्टूडेंट है उसको मैंने कुछ कहा है ना, I have to give him time. दिस इज अनदर मिस्टेक जो मैं पेरेंट्स के साथ देखती हूँ बहुत, और मैं थेरेपिस्ट भी देखती हूँ यहाँ पे करते हुए. वो बच्चे को एक सवाल पूछेंगे ना, व्हाट्स दिस,
and एकदम फेंकेंगे, what's this? It's a smiley face. What's this? No, with my ASD child, I have to say, what's this? And then I have to wait. Because it's a processing delay, I have to wait. और मैं उसकी स्पीड, आप डिले उसकी प्रोसेसिंग को स्पीड नहीं कर सकते, लेकिन आप बच्चे को, जैसा साइट वर्ड रीडिंग है, साइट वर्ड रीडिंग क्या होती है? बच्चा देखता है और बच्चा लफ्ज कह देता है। बच्चा ना उसको फोनेटिकली ढूंढ सॉल्व करने की कोशिश करता है, ना उसको चंक करके, उसको ब्रेकअप करके बच्चा लफ्ज देखता है, कह देता है। इस तरह हम अपने ASD स्टूडेंट्स को और अपने लर्निंग डिलेड स्टूडेंट्स को इतनी प्रैक्टिस कराते हैं और इतने रियल लाइफ कनेक्शंस कराते हैं और इतनी इंसिडेंटल और एनईटी टीचिंग कराते हैं कि वो बच्चे के लिए एक मास्टर कर लेता है बच्चा उस स्किल को, और फिर हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका प्रोसेसिंग डिले कम हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब है कि बच्चे ने कनेक्शंस बना लिए हैं। इसका ये मतलब है कि बच्चे ने कॉन्सिक्वेंस और बिहेवियर के बीच में कनेक्शन बना लिया है, और बच्चे को पता है कि अब इस बिहेवियर से इस बिहेवियर का ये कॉन्सिक्वेंस होगा। Does that make sense? It's a very complicated question and it's difficult for me to explain कि context में किस तरह इसको explain करूं unless you give me a specific behavior. You know? The next question is, what if the child imitates everything? How can we reinforce? So you have to find a reinforcer. Imitation is a very significant skill in ASD. If a child has an imitative repertoire, which means that if a child can imitate, brilliant. Use that skill. My job, the way I work as a therapist is, and the way I am encouraged to work as a therapist is, instead of focusing on the child's weaknesses, I focus on the child's strength. If I have a child who can imitate, जिसकी imitation skills strong है, मैं उसके लिए मॉडलिंग यूज करूंगी, मैं खुद उसको करके दिखाऊंगी, मैं पीयर मॉडलिंग यूज करूंगी, मैं उसकी एज के बच्चे अपनी क्लासरूम में लाती हूँ, ये देखो, इसको देखते हैं, लेट्स कॉपी हिम। इमिटेशन से आप बच्चे को रीइंफोर्स इमिटेशन इस तरह करते हैं। अगेन, रीइंफोर्सर का मतलब मैंने आपको समझाया था, इट हैज टू बी समथिंग दैट इंक्रीजेस द फ्यूचर फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। एक दफा आपने बच्चे का रीइंफोर्सर, कई बच्चे होते हैं जिनका रीइंफोर्सर हमें नहीं समझ आता, वी डू अ रीइंफोर्सर असेसमेंट फॉर देम, व्हिच इज अगेन अ प्रोसेस दैट वी गो थ्रू टू आइडेंटिफाई रीइंफोर्सर्स। लेकिन अगर आपके पास रीइंफोर्सर है, आपको पता है कि ये रीइंफोर्सर है, इससे बच्चे का फ्यूचर बिहेवियर इंक्रीज होगा, आपने वो रीइंफोर्सर हर अटेम्प्ट पे देना है। ये एक मेरी स्लाइड में था, आई टॉक्ड अबाउट कंटिन्यूअस स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो जब आप इनिशियली पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, इनिशियली एनईटी यूज कर रहे हैं और बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं ना, जब हम शुरू करते हैं ना कुछ सिखाना, हम हर अटेम्प्ट को रीइंफोर्स करते हैं। सो अगर समझे कि मेरे बच्चे का रीइंफोर्सर है, एंड मेरा एक बच्चे का रीइंफोर्सर था स्क्वाट ऑफ द हैंड सैनिटाइजर, ही लव्ड इट, I gave him a little bit every time, reinforcement for him. Every time, every single time that he engaged in the behavior, he got it. Every attempt was reinforced. Continuous schedule of reinforcement. And then we faded out. फिर हम हर दूसरी attempt, हर चौथी attempt, हर 8वीं attempt, इस तरह करके उसको fade away भी करते हैं. Because ये याद रखने की बात है कि reinforcement हर in the natural world, in the real world, आपको हर दफा रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल उस कंटिन्यूअस स्केड्यूल पे नहीं मिलती। हमारी रियल लाइफ की जो रीइंफोर्समेंट है वो कंटिन्यूअस स्केड्यूल पे नहीं होती, तो इसलिए बच्चे के लिए भी वो रीइंफोर्समेंट फेड करनी ज़रूरी होती है। अच्छा मेरे मिसेस में एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस बच्चा अगर मोटिवेटेड है कोई चीज़ को लेने के लिए, फॉर इंस्टेंस अगर उसे कहीं बाहर जाना है वो कह देता है, ठीक है, उसे कोई चीज़ चाहिए वो कह देगा। जैसे मैं अपने बेटे की भी बर्थडे बात करूँ तो उसकी बर्थडे आ रही है, he is asking me for a chicken cake, ठीक है, बिकॉज वो उसको कार्ड्स बहुत पसंद है। लेकिन अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नीड्स तो बेस्ड तो कन्वर्सेशन बच्चा कर रहा है, लेकिन अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो उन सिनेरियोज में फिर बच्चे को कैसे बुलवाया जा सकता है? और आई एम श्योर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंप्लेन भी करते हैं कि हमारा बच्चा अपनी मर्जी की बात कर लेता है, लेकिन लॉजिक बेस पे वो डिस्कशन नहीं कर पाएगा या कन्वर्सेशन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा अगर वो मोटिवेटेड नहीं है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आप थिंक ऑफ योर बिहेवियर, बच्चे को छोड़ें, अपने बिहेवियर का सोचें। आप अपने पूरे दिन में, and by you I mean all the parents who are listening, every behavior that you engage in is because there's motivation, and we call it a motivating operation. We call them MOs. MOs हमारे दो किस्म के होते हैं, establishing operation and abolishing operation.
एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन वो होता है जो आपके बिहेवियर को इवोक करे। समझे आपको प्यास लगी है, आपका मोटिवेटिंग ऑपरेशन है प्यास, ठीक है, यू आर थर्स्टी, नाउ यू आर मोटिवेटेड टू फाइंड वाटर, यू विल डू एवरीथिंग जो कि इन द पास्ट हैज लेड टू वाटर। आप उठ के फ्रिज खोलेंगे, या आप कूलर से पानी लेंगे, या आप किसी को भेज के पानी मंगवाएंगे, ठीक है। अगर आपने पानी पिया हुआ है, आपके आगे मैं 10 बोतलें भी ठंडे पानी की रख दूंगी, आपको मोटिवेशन नहीं है, आप नहीं लेंगे पानी। आप जो बच्चे की इसी तरह बच्चे मोटिवेशन होती है तो वो काम करते हैं। और जो बच्चे उस ऐसे सिनेरियो में हम फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करते हैं, जो सिनेरियो आपने डिस्क्राइब किया ना कि बच्चा अपने मतलब में बात कर लेता है, वैसे बात नहीं करता, हम बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाते हैं, हम सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, हम जिस तरह वी कंट्राइव सिचुएशंस एंड वी आल्सो यूज नेचुरली अकरिंग सिचुएशंस। ABA की एक बहुत जरूरी बात है जो कि पेरेंटिंग में भी है बहुत जरूरी बात, टीचिंग में भी है बहुत जरूरी बात, you're always on, you don't get a break. Absolutely. Especially in the formative years, especially in the early years, but then it goes a long way. फिर जब आपका बच्चा, because the ultimate aim is to make the child as independent as possible, तो फिर जरा बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, उसके बिहेवियर स्ट्रेंथन होते हैं, उसकी सेल्फ केयर स्किल्स, उसकी इनिशिएशन स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती हैं, इंडिपेंडेंस की तरफ जाता है, फिर आप थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं। बट द थिंग इज कि ABA एंड ऑल, इट रिक्वायर्स a lot of attention. Yeah. Okay, the next question is, sometimes a therapist use screen as a reinforcers. What is your stance? Okay, so please keep in mind that as a parent, you are dealing with one, maybe two children. As therapists, we deal with dozens of children. Sometimes we deal, हमारे one-on-one sessions होते हैं, कई दफा हमारे group sessions होते हैं. I am not opposed to screen, but I am 100% opposed to excessive screen time. I am 100% opposed to just handing a child a screen because it makes it easier for you. Anytime I give a child a screen, जैसे बच्चे ने वीडियो देखना है, मैं टाइमर इस्तेमाल करती हूँ. I use a timer. बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं होता. टिपिकली डेवलपिंग बच्चों को भी छोटी उम्र में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं होता. आप सोचिए, आप कहीं गए हैं, किसी आप इवेंट पे गए हैं या कहीं गए हैं, और आपका बच्चा कहता है अम्मी मैंने घर जाना, आप कहते हैं 5 मिनट में चलते हैं. आधा घंटा गुजर जाता है, आप अभी वहीं के वहीं बैठे हैं. 5 मिनट तो कब के गुजर गए, आप नहीं उठे ना. बच्चे को तो नहीं पता चला कि 5 मिनट गुजरे हैं, आधा घंटा गुजरा है. सो जब आप बच्चे को स्क्रीन जैसी चीज देते हैं, दैट वी नाउ नो इज एडिक्टिव. Screens are addictive. We have enough research on that to know that screens are addictive. जब आप बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, आप टाइमर लगाएं और बच्चे को आप कहें कि जब ये टाइमर, when this timer beeps, the screen is done. As soon as the timer beeps, उसमें ये कि you have to be there. आप टाइमर लगा के इधर उधर नहीं हो सकते. टाइमर लगा के आपने वहां बैठ के, as soon as the timer beeps, you take the screen away. बच्चा थोड़ा रोएगा, थोड़ा टेंट्रम करेगा. It's okay. As long as the child is not harming himself, injuring himself or hurting someone else, let the child. कुछ नहीं होता अगर वो थोड़ा सा tantrum कर रहा है. It's okay, as long as he's not hurting himself or others. And then very quickly, the child will understand that I get the screen back. आपने स्क्रीन टाइम को रिप्लेस करना है ना. अब ये बच्चा है, उसके हाथ में स्क्रीन है, फोन है. अब आपने फोन का टाइमर डिंग हो रहा है ना, तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना, इट हैज टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर द चाइल्ड. मेरे पास एक बच्चा आया था, उसका बिल्कुल एग्जैक्टली आई एम वर्किंग ऑन दिस विद हिम. ही लव्स टू पेंट. तो उसको मैं फोन दे के ना, आई सेट आउट हिज पेंटिंग इक्विपमेंट फॉर हिम. सो ही सीज कि अच्छा ठीक है, आई गिव अप द स्क्रीन बट आई एम गेटिंग पेंटिंग. ठीक है. सो यू कंपीटिंग रीइंफोर्सर बेसिकली. ही गिव्स अप हिज स्क्रीन. अच्छा पहले मैं स्क्रीन लेके पीछे रखती थी, अब इट सिट्स देयर राइट इन फ्रंट. अब उसकी टॉलरेंस बिल्ड होगी. अब उसको पता है पेंटिंग के लिए भी मैं टाइमर ऑन करती हूँ. उसको पता है कि अब टाइमर खत्म होगा ना, तो पेंटिंग गोज अवे, फिर स्क्रीन आ जाएगी. तो इस तरह करते करते मैं स्क्रीन के लिए कंपीटिंग रीइंफोर्सर्स इस्तेमाल कर रही हूँ टू यूज अदर रीइंफोर्सर्स बिसाइड्स द स्क्रीन. एंड इवेंचुअली आई विल फेड स्क्रीन टाइम. आई विल नॉट इवन यूज द स्क्रीन एज अ रीइंफोर्सर, बट आई विल रिप्लेस इट with equally strong reinforcers. I have to give the child things that he likes to do. उसको पेंटिंग पसंद है, फर्क किस्म की पेंटिंग अपॉर्चुनिटीज.
हाथों पे पेंट लगाए, हाथ हैंड प्रिंटिंग करे, वेजिटेबल्स के ऊपर पेंट लगा के पोटैटो प्रिंटिंग करें, स्टैंपिंग करें, बाहर बैठ के पेंटिंग करें, अंदर पेंटिंग करें, फ्रेंड के साथ बैठ के पेंटिंग करें, you know. So इसी तरह, and then obviously not just painting, other activities that we use. So you have to find a competing reinforcer for the screen and use a timer. Use a timer. Okay. The next question is, how can we use PRT in functional skills such as at home or at a public place? How can we use PRD in functional skills of a child at home or at a public place? Again, ये बहुत broad question है. इतने broad question का answer भी ना बहुत ambiguous और broad होगा. So pivotal response training जो है ना, we can use it in the natural environment, but pivotal response training is usually in a learning environment. Because the purpose of pivotal response training is कि आपने बच्चे को learning environment में एक behavior सिखाया है, and then that behavior or a modification or a variation of that behavior occurs in a different environment. Pivotal response training का ये है. Natural environment में, public place में आप incidental teaching और NET use कर सकते हैं. Pivotal response training जो है वो हम learning environment में ज़्यादा effectively use कर सकते हैं. Does that make sense? Okay. The next question is, my child likes to work himself in order to avoid speaking. What's wrong with that? I'm not seeing the problem here. I'm sorry. If he is working by himself, if he's working independently, that's the goal. So he doesn't speak and to avoid speaking. So this is escape and avoidance behavior. And again, please remember, I'm only going by the very, very limited information जो आप लोग मुझे इस वक्त दे रहे हैं, right? So if the child is not speaking to you and you have determined that he continues to work independently so he doesn't have to speak to you, what happens when he does speak to you? What is the consequence of his speaking? या वो बोल रहा है और आप उससे कहती हैं ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं, या आप उसकी स्पीकिंग को क्रिटिसाइज कर रही हैं, या आप उसकी स्पीकिंग को, उसको एवरी टाइम ही स्पीक्स द मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप उसको करेक्ट कर रही हैं, या वो स्पीक कर व्हेन ही स्पीकिंग आप उसको अटेंशन दे भी रही हैं कि नहीं दे रहे, उसको क्या मिल रहा है स्पीकिंग से? ऑब्वियसली जो उसको स्पीकिंग से मिल रहा है, इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट ऑफ स्पीकिंग. Does that make sense? So the child may be escaping or avoiding talking to you because of the consequence of talking to you. What is the consequence? That is what you need to find out. Okay. बहुत अच्छा आपने इस चीज़ का आंसर दिया, बिकॉज ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, मिसकंसेप्शन है कि पेरेंट्स को कि दे डोंट लुक एट देमसेल्व्स. उनको लगता है कि अगर हम ABC कर रहे हैं तो सिर्फ शायद हमें बच्चे के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि पेरेंट्स को अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ. I have to tell you something, Elena, and I'm going to take this opportunity to say, when parents contact me और मुझे कहते हैं कि जी ये है और ये है और बच्चा ये और बच्चा वो, I tell them, if you are going to come to me and take an hour of my time, unless you are willing to also change your behavior, I'm not going to be able to help you. Think of a lot of parents come and say, ये बहुत stubborn है, मेरा बच्चा stubborn है. And I ask them this, कि जब आपका बच्चा stubborn है, आप उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? You are being equally stubborn. What is happening? आप बच्चे को कह रहे हो कि ये करो और बच्चा कह रहा है मैंने नहीं करना. आप कह रहे हो करो, वो कह रहा है नहीं करना, करो, नहीं करना. क्या हो रहा है? You are being equally stubborn. You are modeling stubbornness for your child. Giving in to what your child is asking is not, it doesn't make you a bad parent. As long as the child's requirement or his demand is reasonable or within or it's possible, then do it. Do not turn our children, our population, हम इन बच्चों के साथ ये नहीं कर सकते कि मैं माँ हूं तो मेरी बात चलेगी, मैं बाप हूं और मैंने कह दिया. We cannot do this with our children. Our children, especially children who imitate really well, आपको गुस्सा करते देखेंगे वो भी गुस्सा करेंगे, आपको मारते देखेंगे वो भी मारेंगे. ये वही बात है कि बच्चे को थप्पड़ मार के कहते हैं माँ बाप मारना नहीं है, भाई को नहीं मारना, बहन को नहीं मारना.
बट आप तो मुझे मार रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे मार रहे हैं, मैं भाई से बड़ा हूं, मैं भाई को मारूंगा. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? पेरेंट्स थिंक कि चूंकि वो बड़े हैं हमारे इस मुआशरे में, अब एक्चुअली वहां पे भी ये इशू है कि पेरेंट्स समझते हैं कि चूंकि हम बड़े हैं, हम सर्टन बिहेवियर्स हैं जो हम कर सकते हैं और बच्चे नहीं कर सकते. नहीं, जो एक बिहेवियर गलत है वो सबके लिए गलत है. और हम अपने बच्चों को, अपने ASD और लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को बहुत कुछ मॉडलिंग के थ्रू सिखाते हैं, बहुत कुछ मॉडलिंग के थ्रू सिखाते हैं. इसलिए हम ऐसी सिचुएशंस मैं अपने काम पे क्रिएट करती हूँ जिसमें पानी जान के गिराती हूँ, क्योंकि मुझे माँ बाप ने बताया कि जो बच्चा है कुछ गिर जाए तो ये बहुत परेशान होता है. मैं जान के गिराती हूँ, उसको हम डिसेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं. एंड देन आई से अब कुछ नहीं होता, पानी गिर गया, प्रॉब्लम है, चलो लेट्स सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करेंगे? फिर बच्चा कहता है इसको हम वाइप कर सकते हैं, इसको हम टिश्यू से वाइप कर सकते हैं, पेपर टॉवल से, किसी रैग से वाइप कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो अगर कुछ होए ना ऐसी चीज, ट्राई एंड टर्न इट इनटू अ टीचेबल मोमेंट. वो एक आई हैव अ लवली ब्यूटीफुल कोट, आई विल सेंड इट टू यू, मे बी यू कैन पोस्ट इट. Don't use your emotional reactivity. Use your problem solving skills with your children. Brilliant. अच्छा जी, next question Next देखते हैं. question. When I started using food as a reinforcer, he stopped following my command. Instead, he started fighting and hitting me to get that food reinforcement item. Yeah, that is a problem. So when you started using food as a reinforcer, he stopped following directions. To get that, what did you do? Did you give him the food when he hit you? If you gave him the food when he hit you, you reinforced hitting behavior. That food, if you are using it as a reinforcer, should only be available to him contingent on the behavior that you are teaching him. ये भी कई दफ़ा हम गलती करते हैं एज पेरेंट्स. हम ये गलती करते हैं कि हम रीइंफोर्सर को ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो बच्चा बारी बारी चाहता है. जिस तरह आप बच्चे के फेवरेट फल को रीइंफोर्सर नहीं बना सकते हैं, बिकॉज आप बच्चे फूड आइटम्स में भी ना जब हम रीइंफोर्सर्स इस्तेमाल करते हैं ना, वी यूज समथिंग लाइक गोल्ड फिश और गमी बेयर्स होते हैं ना. गमी बेयर्स को मैं बैठ के एक एक गमी बेयर से मैं 10-12 पीस बनाती हूँ, इतने बड़े छोटे छोटे पीसेस मैं बनाती हूँ. तो ऑब्वियसली मैंने बच्चे को शुगर नहीं देनी. द प्रॉब्लम इज कि अगर आप एक बच्चे को बिहेवियर, यू आर टीचिंग अ चाइल्ड बिहेवियर एंड यू हैव अ रीइंफोर्सर अवेलेबल, उस बच्चे ने अगर टेंट्रम किया या हिटिंग किया और आपने उसको दे दिया ना फूड आइटम, you've lost this battle. Don't use that as a reinforcer anymore. Find a new reinforcer. Does that make sense? Because now the parent hasn't told me what the consequence of hitting is. I'm guessing, because this is what I see, as soon as the child goes into a hitting or aggression, parents immediately, अच्छा ठीक है, अच्छा चुप करो, मैं ले देती हूँ, अच्छा ठीक है, मारो नहीं, बहन को नहीं मारो, मैं ले लो, तुम ले लो. We've reinforced the hitting, we've reinforced the aggression, we've reinforced the tantrum. So the parent who wrote that, I need to know what the consequence was. So find a new reinforcer. Again, reinforcers are tricky because we never work with just one. We have backup reinforcers that we identify. क्योंकि कई दफ़ा ये होता है, reinforcement is based on two principles, satiation and deprivation. Satiation means कि एक बच्चे को एक reinforcer इतनी दफ़ा मिल गया कि वो तंग आ गया उससे. Now he's not working for it. Now the reinforcer is not a reinforcer anymore. So we create a sense of deprivation. ताकि जिस तरह मैं आपको बताया ना, हम चीज़ दूर रखते हैं, उसको नज़र आ रही है लेकिन उसको सिर्फ तब मिलेगी if I'm working on mending, कि मुझसे वो मांगे, वो चीज़ उसके लिए अवेलेबल है, सामने पड़ी है, ठीक है, ही हैज़ टू आस्क मी फॉर इट. उसको सिर्फ तब मिलेगी जब वो मुझसे पूछेगा. मैं फिर टाइमर लगाऊंगी, उसको कुछ टाइम दूंगी, फिर मैं वापस ले लूंगी, सर ऊपर रख दूंगी वापस. बिकॉज दैट्स अ टीचिंग, दैट्स लेसन गोइंग ऑन, दैट्स द टीचिंग एनवायरनमेंट. अब एक दफ़ा उसने मांग ली है तो वो उसको मैं दे नहीं सकती बहुत ज़्यादा देर के लिए, जब तक मेरे डेटा पे मुझे मास्टरी क्राइटेरिया नहीं मीट हो गया कि 8 out of 10 times he is going to ask for it. 8 out of 10 times जब वो कर लेगा, then he can have it longer. So pivotal response training is best done obviously by a therapist who's trained and had experience in that. NET and incidental you can do anytime, anywhere.
Okay, the next question is, why is it difficult for the parents to afford a BCBA? That's a great question. And I will tell you this, to become a BCBA is very hard work. I've spent 12 years to get where I am. I've paid a lot of college tuition. I've paid my supervisor. I've worked through COVID. Our school special ed department never closed. We were the only 6 people in the building during COVID because our kids cannot take a break from learning. We teach them in the summer also. We work very hard. The other thing is, uh, I'm I'm the kind of BCBA who likes to work with children. A lot of times BCBAs get to that point where they just make the programs and RBTEs work with the students. And the BCBA just takes the data from the RBT. I'm not that kind of a BCBA. I take my data myself. I work with the child myself. सो अब मेरे एक्सपीरियंस और मेरी उसमें ये मेरी रोटी रोजी है भाई. आई हैव टू अर्न सम मनी विद दिस इज हाउ आई सपोर्ट माई सेल्फ. आई कुड जस्ट कम बैक आफ्टर. और बहुत से लोग मुझे यहाँ ये कहते हैं कि तुम बीए करके आ जाती, तुम तो बीए करके भी ये कर सकती थी. आई एम लाइक, या कर तो सकती थी, पर जो मेरे पास अब एक्सपीरियंस और तजर्बा और एजुकेशन और वो सब है. ऑब्वियसली आप एक डॉक्टर के जाएं, आप एक डिस्पेंसर के पास तो नहीं ना जाते सर्जरी के लिए, सर्जन के पास ही जाते हैं ना. सर्जन आपसे डिस्पेंसर जितने पैसे तो नहीं ना लेता, राइट? तो इट्स द सेम थिंग. आई मीन जो एक कोई बीसीबीए के लेवल तक पहुंचा है और बीसीबीए डी विच इज पीएचडी के बाद आप बीसीबीए डी बनते हैं, उस लेवल पे पहुंचा है, बहुत मेहनत और बहुत टाइम के बाद पहुंचा है. सो आई नो कि स्कूल्स हैं यहाँ पे where the BCBA don't work with their children. I can't speak for them. That's the business model they've set up. My business model is that I work with the child. So I mean, मुझे अभी बहुत लोगों ने कहा कि तुम पैसे नहीं ले रही हो, तुम तो बहुत कम पैसे ले रही हो. I'm like, I don't know what to do. People come to me, tell me they can't afford it. Of course, I make exceptions. So my purpose is not all BCBAs are expensive. Let me just put it that way. I'm not crazy expensive. और दूसरा ABA यार individualized है. अब तुम देखो कि इस वक्त जब मेरे पास शुरू में मैंने जब किया, 3 kids coming to me, उन तीनों बच्चों के लिए programs, and I literally work from 8 a.m. to 6:30 in the evening because मैं programs देखने होते हैं, मुझे update करने होते हैं, programs data input करना होता है, graphing करनी होती है. फिर हर बच्चे के लिए रोज मुझे अपनी फोटोकॉपीज करानी होती हैं, मटेरियल खरीदना होता है. आज मैं सुबह गई हुई थी बाजार and I picked up about $15,000 worth of 15,000 rupees worth of material for the children that are working with me. So मेरी फोटोकॉपीज का bill last month was 45,000 rupees because I have to get worksheets and papers and stories. एक मेरा बच्चा है, उसको he's had a baby in the family, so I printed out books for him to welcome a baby in the family. So because it's expensive, good ABA therapies cost the therapist a lot of money. So we have to make some money back, right? Okay, the next question is, my child is mild ASD, hyperactivity is on the peak, especially outside the home. How to deal with it? Outside the home is an environment that you cannot control. Inside the home, you can control the environment. And when you control the environment, obviously then you are able to control the things that trigger and control the environmental variables that trigger his hyperactivity. Outside, you cannot. So what we do is when we go on field trips and even we have bags for every child. We have a bag with things in it for the child. स्ट्रेस बॉल्स होते हैं, फेवरेट टॉय होती है, कोई वो बोर्ड्स होते हैं दैट यू राइट ऑन इन रेस. एंड वी टेक थिंग्स लाइक द हेड कैंसलिंग हेडफोन्स, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं फॉर चिल्ड्रन हु डोंट लाइक लाउड नॉइजेस. सो टेक समथिंग विद द चाइल्ड. जब आप बच्चों को घर से बाय समथिंग, आई डू नॉट मीन एन आईफोन. आई डू नॉट मीन give an iPhone to your child. I mean, take something else for the child that will keep him occupied. Noise cancelling headphones work wonderfully for children who are sensitive to noise. And then if your child has a sensitivity to loud sounds or bright lights,
then उसको उस environment में मत लेके जाएं unless it's extremely necessary. Don't take your child into that environment unless we teach him tolerance for it. इस क्वेश्चन का मैं बेस्ट आंसर ये दे सकती हूँ क्योंकि इट्स again like I keep saying it's a ABA is very specific. I need a lot of information. When parents come to me, I take about 10 pages of notes for each child. I need a lot of information to give you very specific answers. और इसलिए मैं कहती हूँ Facebook पोस्ट पे ऐसे questions मत पूछा करें because लोग आपको जो जवाब दे रहे हैं none of them apply to your specific situation. Absolutely. Okay, the next question. इसके बाद हम एक और question लेंगे and then we will wind it Then up. we'll wrap. Okay. Okay. If we set certain goals for a child to finish it in a specific time period, and in between the whole process, he throws tantrums or gets into stomach, shall we stop the task or complete it? अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर ही रहने देना because it's a don't get rid of the question Okay. because it's a long question. So we set certain goals for a child to finish in a specific time period, and in between the whole process, he either throws tantrums or gets into stimming. Shall we still aim to finish the task or leave it completely? Neither. You need to modify the task. Obviously, if your child is throwing a temper tantrum or getting into stimming, either the task is too hard for him, too easy for him, or too long for him. Does your child have the capacity? Has he learned how to sit in his seat? Or has he learned how to stay in place for the task? Is the task something that the child knows how to do already? Or is it something he's learning to do? Is it something, again, behavior has a purpose? If he's throwing a tantrum or gets into stimming, I'm going to go out on a limb and say that he's engaging in escape behavior. He's in a situation that is aversive to him. He is trying to escape. No, do not make him sit there and do something because if बच्चा एक stimming में चला जाए या बच्चा tantrums में चला जाए, you've lost that child. It's useless to stand there and tell the child, do this, finish it first and then we go. No, you've lost the child. What you need to do is modify the task. Make it very short. So example, if आप एक बच्चे को वर्कशीट करा रहे हैं, समझे कि उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस हैं, एडिशन क्वेश्चंस हैं, 2 + 2, 4 + 6, इस तरह के. बच्चा नहीं कर रहा वो 5 at a time. आप उसको एक कराएं and give him his reinforcer. If his reinforcer is a break, teach him how to ask for a break. Put a card that says break on his desk. Teach him how to point to that card. As soon as he finishes one question, you earned a break. Put a timer. Go do whatever you want. No direction. You choose. When the timer beeps, the child comes back. Do the second question. Oh my God, you earned your second break. Go. Do whatever you want to do and set up things that he enjoys doing, obviously. Give him access to that. Bring him back for the third. Now the child knows, oh, okay, I do one, I get a break. I come back, I do the second, I get a break. Once that's set, we've set that pattern reliably. We have data to see if he's reliably doing it. Then I'm going to increase it to 2 sums. Now you will do 2 sums and then you will go get a break. And that's how I'm going to increase his on-task behavior. That's how I'm going to increase staying in seat behavior. I've modified my teaching. Okay? I hope that makes sense for this. Absolutely. Okay, we are going to take the last question now. How to help a child in exciting situation? Usually in excitement, kids go out of control. ये तो normal बच्चे भी करते हैं. They don't stop. Typical बच्चे. Elena, I'm going to interrupt you. Typical बच्चे. I'm sorry. Yeah, typical बच्चे भी करते हैं. Typical बच्चे. Yeah, definitely. How to help a kid in exciting situations? Acha. What exciting situation? What's exciting to you may not be exciting to me. So I'm honestly unable to understand this question. So give me an exciting situation. Do you mean that there's a lot of people present? Do you mean there's a lot of sensory, sensory overload for the child? Loud noise, music, too many people talking. Is that what you mean when you say exciting situation? And the kid gets out of control. What do you mean out of control? Out of control is again very vague. What is out of control to me or may not be out of control to you? What do you do in that situation? Again, like I said, take a sensory bin.
or take a, I can't call it a sensory bin, take an activities bin with your child wherever he goes. Exciting situations, if you mean noise, take noise cancelling headphones for your child. Another thing you can do is take the child for a break. When you're in an exciting environment and you know that your child is going to have trouble with it, थोड़ी देर उसमें रहे, take him out for a break, then bring him back in. Take him out for a break. Okay? I hope that answers the question. Okay, this question caught my eyes because ये बहुत Oh, important है. Like, yes, और I will take this question for sure. मैडम साहिबा, मैंने सुना है कि ABA थेरेपी में चाइल्ड को क्लासरूम classroom में टॉर्चर torture करते हैं. है, क्या ये राइट है? Okay. Someone who doesn't know how to do ABA therapy is likely to do this. इसका उर्दू में इसीलिए आप मैंने प्लीज शुरू जवाब देंगी. आई एम सॉरी हाँ, कट यू ऑफ. इसको बिल्कुल. उर्दू में प्लीज. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. हाँ, नहीं, मैं करती हूँ. मैंने शुरू में कहा था कि एक थेरेपिस्ट जिसने सिर्फ कोर्सेज करके थेरेपी शुरू कर दी है और एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, और उनको ABA के लफ्ज आ गए हैं सारे और डेफिनेशंस आ गई हैं सारी, लेकिन उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया. हाँ, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके बच्चे को, टॉर्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट हो सकता है कि वो ABA आपके लिए, आपके बच्चे के लिए एक तकलीफ दे एक्सपीरियंस है. ABA अगर सही तरीके से किया जाए, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है फॉर द ऑटिज्म पॉपुलेशन. ABA में शुरू में, बिकॉज देखिए मैंने ये भी कहा था शुरू में कि अभी भी एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हम अभी तक बहुत कुछ सीख रहे हैं. ABA में शुरू में जब अप्लाई करना शुरू किया था इसको, तो पनिशमेंट प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा दिए जाते थे बच्चों को, क्योंकि अभी समझ नहीं थी ऑटिज्म की, और ये समझ नहीं थी कि ये बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं. ये बच्चे बड़ी अच्छी इंडिपेंडेंट, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल इंडिपेंडेंट जिंदगी जी सकते हैं, एक डिग्निफाइड जिंदगी. ये अपने आप को, अपना बाथरूम खुद जा सकते हैं, अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं, अपना खाना खुद हल्का फुल्का बना सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं हल्की फुल्की दुनिया में निकल के. जब हमें ये नहीं पता था ABA थेरेपिस्ट को, तो वो पनिशमेंट यूज करते थे. फिर टाइम के साथ साथ, और उसको कहते थे, उसको हमारे बुक्स में कहते हैं अवर्सिव कॉन्ट्रोवर्सी. टाइम के साथ साथ हमें पता चला, हमारे थेरेपिस्ट को पता चला, रिसर्च के साथ पता चला कि पनिशमेंट प्रोसीजर्स, हालांकि पनिशमेंट है एक ABA का प्रिंसिपल, लेकिन पनिशमेंट से ज़्यादा रीइंफोर्समेंट काम करती है हमारे बच्चों पे. हम बच्चे को जो थेरेपिस्ट गलत टॉर्चर कर रहे हैं ना, वो रीइंफोर्समेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे. वो रीइंफोर्समेंट को टाइम पे नहीं इस्तेमाल कर रहे. उन्होंने बच्चे के लिए सही रीइंफोर्सेस नहीं ढूंढे. ये मैंने भी सुना है, अनफॉर्चुनेटली मैंने भी ये सुनी है बात कि बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं स्कूल या थेरेपी सेंटर्स, और चूंकि उनके, और यहाँ पे जी एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, टर्नओवर रेट बड़ा हाई है. बिकॉज देखें ना, आप यहाँ टीचर बनने के लिए ना आपको स्कूल, पाकिस्तान में तो एवरीवन बॉर्न अ टीचर, हर कोई यहाँ टीचर पैदा होता है. कोई स्कूल नहीं जाने की ज़रूरत, कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेने की ज़रूरत, कोई आपको प्रैक्टिस एग्जाम नहीं पास करने, आप टीचर बन जाते हैं एज अ ट्रांजिशन इन बिटवीन योर लाइफ, आप टीचर बन जाते हैं. अब वो जो टीचर्स थेरेपी वगैरह करते हैं, उनकी थोड़ी सी आप ट्रेनिंग करो ना, वो जाके अपना सेंटर खोल लेते हैं. वो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं होते और वो जाके अपने सेंटर को खोल लेते हैं, और वो वाकई इन बच्चों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं. इसीलिए मैं बारी बारी पेरेंट्स को कहती हूँ कि कोई भी, ये अगर आपको एक थेरेपिस्ट कह रही है ना कि मैं आपसे 1500 रुपए लूंगी महीने के, वो क्वालिफाइड नहीं है, उसने वो मेहनत नहीं की जो कि एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट ने की है. तो आप क्रेडेंशियल्स पूछें थेरेपिस्ट के, ऐसे ही अपना बच्चा क्रेडेंशियल्स के हवाले ना बाद करें. भी कितना अरसा उनको काम, कितने आवर्स उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसके बाद वो बच्चों के प्लान्स बना सके या बच्चों के साथ काम कर सके? ये चीज अच्छा, बहुत मैटर करती है बिकॉज हाँ, ये चीज को केटर ही नहीं किया जाता यहाँ. अच्छा, यहाँ पे लॉ नहीं है, लेकिन जो लोग बिहेवियर एनालिसिस बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं, जो लोग अपने आप को BCBA कहते हैं या RBT कहते हैं या BCABA कहते हैं, हमारा एक एथिकल कोड है. उस एथिकल कोड में RBTs प्रोग्राम्स नहीं बना सकते. RBTs प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करती हैं और डेटा लेती हैं. RBTs कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली. BCABAs प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और BCABAs RBTs को सुपरवाइज कर सकते हैं.
ठीक है। BCBA जो है वो 3rd टियर है आपका, ठीक है, 4 टियर्स है ना टोटल, 3rd टियर आपका BCBA है। BCBA इज अ ग्रेजुएट लेवल, मीनिंग कि आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी जरूरी है। BCABA आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री भी होनी जरूरी है। BCBA आपके मास्टर्स की डिग्री होनी जरूरी है। अब जब आप BCBA बनते हैं, वो मैंने आपको कहा था 1500 आवर्स ऑफ सुपरविजन मैंने की थी, अब इट्स 2000 आवर्स ऑफ सुपरविजन, ठीक है। आपने स्पेसिफिक कोर्सेज करने होते हैं, ये नहीं कि मैंने मास्टर्स कर लिया कहीं से भी तो अब मैं BCBA के इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। नो, यू हैव टू हैव स्पेसिफिक ABA रिलेटेड कोर्सेज, कोर्स सीक्वेंस आपको पूरा करना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं इतने साल इस फील्ड में रहने के बावजूद भी अच्छा, फिर जो BCBA है ना और BCABA, हमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट्स करने पड़ते हैं। हमें हर 2 साल 32 क्रेडिट्स, यानी कि हमें वापस स्कूल कॉलेज के कोर्सेज करने पड़ते हैं या हमें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये फील्ड अभी भी बदल रही है, इसमें बड़ा कुछ नया आ रहा है, तो हमें अपडेट अपने आप को रखना पड़ता है। जो थेरेपीज 10 साल पहले चल रही थी ना, मैं वो थेरेपीज नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि मैंने अब मैंने नई स्ट्रैटेजी सीखी हैं, बिकॉज मुझे हर 2 साल 32 क्रेडिट्स लेके सबमिट करने हैं, प्रूफ सबमिट करना है कि मैंने ये मेंटेन किया है, फिर मेरी रीसर्टिफिकेशन होगी। तो एज फार एज एक्सपीरियंस एंड ऑल गोज, देखें, there's no such thing as too much experience in the field of ABA. I'll be honest with you. Even with my 12 years of experience now, I need more. There's always room for more. इसलिए मैं पेरेंट्स को बारी बारी कहती हूँ कि एक्सपीरियंस, जो लोग कहते हैं ना years of experience या कहते हैं lots of experience, that's nothing. Ask for the number of years. Ask कि उन्होंने किसकी सुपरविजन में काम किया। अच्छा, टू रैप इट अप, आई वुड से कि PRT जो सी है वो घर पे नहीं की जा सकती, ये किसी प्रोफेशनल के साथ ही आप करेंगे, और इंसिडेंटल टीचिंग आप जो सी है वो घर में कर सकते हैं, बिकॉज अक्सर ये ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है कि हम बच्चों के साथ PRT करना चाह रहे हैं खुद से, तो दिस इज समथिंग कि वो आप प्रोफेशनल हेल्प के बगैर बिल्कुल अप्लाई ना करें। जैसे कि मेहरुन्निसा ने भी कहा कि अनलर्निंग फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, और PRT के लिए भी जो आपको प्लान्स मिलेंगे वो एक प्रोफेशनल ही डिज़ाइन करेगा, जिसने कुछ आवर्स जो है काम किया हो इन चीज़ों, बहुत से आवर्स। It was such an eye-opening session today. We would love to have you again. क्योंकि आपने इतनी अच्छे तरीके से सारी जो मिथ्स है उनको क्लियर अप किया है। बेचारे ABA के ऊपर से बहुत सारे लोगों का भरोसा उठ रहा था, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा खुद से पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे। एक प्रॉपर सर्टिफाइड पर्सन के पास जब आप जाते हो जिसका एक्सपीरियंस होगा, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। Would you like to add up something else? Otherwise, we are going to. I mean, other people who had questions, I can send my email, and then people can reach out to me through email. So मैं ये chat में लिख दूँ यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो नहीं टाइपिंग हो पाएगी, आई बिलीव यू कैन ट्राई। इसके लिए आप फेसबुक पे देख लीजिएगा, यू कैन, ठीक है, आप इसी पोस्ट नीचे अपने वो जो 2 PDF फाइल्स है, इफ यू कैन शेयर दैट लिंक, ताकि लोग डाउनलोड कर सके, वो भी कर दीजिएगा, और अपना email ID, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह बता दीजिए in case someone wants to contact you. Thank you so very much. Thank you so much, Elena. Thank you for this opportunity. I hope to work with you again. Allah Hafiz. Take care. Thank you, everyone. Take care. Allah Hafiz.